We are going to start with the chapter Coding Decoding. Now this is a very important chapter, as for SSC every year there are 6 to 8 questions from this chapter. Some questions are direct coding decoding, they give the question in a language format, and some are being asked in the analogy type of questions. Right, so let's see what is this chapter. As this is very important chapter, we will try to master this chapter as of today. We will learn this chapter very clearly, try to improvise its concepts, right, so that we score good marks in this chapter and have a score at a very best level, right. So let's start with coding decoding. There are 5 types of questions that can be asked in coding decoding, right. What are these 5 types? Let's understand them first. First type is called letter coding. Now what is letter coding? In letter coding, each letter would have a letter code only, right? Suppose there is a code like there is a word like bat, B-A-T, right? There is a word B-A-T, and for B-A-T there is a code C-A-T. Now B-A-T has a code C-A-T, right? So you can see every letter has a code of letter only. So this comes under the category of letter coding. Second type is called direct letter coding. Now what is direct letter coding? Here also the code, there will be only letter codes only, right? Suppose we have one word like bat has a code of CAT. Next word we have team, right, and the code for team is, let's say, SAXZ, right? So we have 2 words which have different codes. Now the third word for which we have to find the code, वो तीसरा word जिसके लिए हमें कोड पता करना होगा, वो इन 2 वर्ड से मिला के बनेगा, that is team and bat. So my next code will be ATEM. So now we have a word ATEM. Now we have to find the code for ATEM. ATEM का जो कोड है मुझे इन्हीं 2 वर्ड से मिल जाएगा, बिकॉज एवरी वर्ड के लिए जो ATEM के अंदर जो भी वर्ड्स आ रहे हैं उनके लिए कोड मेरे पास ऑलरेडी डिफाइंड है. सो डायरेक्ट लेटर कोडिंग को हम इस हिसाब से सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट इज कॉल्ड नंबर और सिंबल कोडिंग. नंबर और सिंबल कोडिंग के अंदर क्या होता है, एक जो भी कोड होगा, जो भी वर्ड होगा, उसके लिए जो कोड गिवन होगा वो कोड नंबर्स के फॉर्मेट में होगा. सपोज आई हैव अ वर्ड लाइक बैट. सो बैट का कोड होगा, लेट्स से 2120, राइट. तो उसके करस्पॉन्डिंगली कोई एक वर्ड दे दिया जाएगा, लेट्स से कैट. कैट का कोड मुझे बताना है क्या होगा, राइट. सो इस हिसाब से नंबर और सिंबल कोडिंग को हम सॉल्व करेंगे. The fourth type is called deciphering message, right. In deciphering message there will be a message given to you and a corresponding code for it. You have to decipher the message. Decipher मतलब हर एक उस मैसेज के वर्ड्स के रिस्पेक्टिव कोड्स आपको बताने होंगे. इस टाइप को हम क्वेश्चन की ही फॉर्मेट में देखेंगे. And last one is substitution coding. In substitution coding there will be different substitutes that will be given to you. We will see what is substitute coding in the questions itself, right. So these are 5 types. इन 5 टाइप्स में से किसी भी टाइप के ऊपर आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है, राइट. फर्स्ट वी विल ट्राई टू फिगर आउट व्हाट इज द टाइप, ईच टाइप इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, एंड देन उस टाइप के हम रूल्स को लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सो लेट्स टेक द फर्स्ट टाइप, दैट इज लेटर कोडिंग.